నవభారత నిర్మాత అంటే డాక్టర్ బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ సామాజిక న్యాయ ప్రదాతకు కృతజ్ఞతగా భావితరాలకు స్ఫూర్తిగా ఏపీ సర్కార్ సామాజిక స్ఫూర్తివనాన్ని రూపొందించింది. ఇప్పుడు అందరి చూపు అటువైపే. అందరి చర్చ విగ్రహ శిల్పుల గురించే. విగ్రహ నిర్మాణం వారు ఏమంటున్నారు ఇప్పుడు చూద్దాం. సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్, న్యూ పార్లమెంట్, అంబేద్కర్ విగ్రహం, సుప్రీంకోర్టు, ఏదైనా దేశంలో మహాకట్టడాలని మనం తీసుకుంటే నరేష్ కుమావత్ పేరు మాత్రమే వినిపిస్తోంది. ఆయనలో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటి? ఎందుకు వారి వెంట పడుతున్నారు? అసలు విగ్రహావిష్కరణలో ఆయన ఎలాంటి స్పెషాలిటీస్ చూపిస్తున్నారు? TV9 ఎక్స్క్లూజివ్ ఇంటర్వ్యూ చేస్తోంది. నరేష్ కుమావత్ ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు. जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे लिए टाइम तो दे रहे हैं जी, बिकॉज इतने बिजी पर्सन हैं आजकल, क्योंकि यही है आपका खास बात क्या है जी? आप क्या स्कल्पचर में क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, कैसे होता है काम? सबसे पहले तो मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली और लकी मानता हूं कि आदरणीय चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी साहब ने मुझे ये मौका दिया कि यहाँ पे 206 फीट ऊंची मूर्ति हम बनाएं, जो 125 फीट ऊंची स्कल्पचर है और 85 फीट का उसका चबूतरा है. दिस इज़ अ वेरी रेयर फिनोमिना ऑफ माई लाइफ दैट आई हैव got an opportunity to sculpt and design such a huge mammoth of Dr. Bhimrao Ambedkar Saab, who has sculpted this country, and I'm lucky enough to sculpt his sculpture. Wow. So I would especially thanks to Sri Lakshmi ma'am, who is the director of this whole episode, you know. She has directed us on each and every step. She has guided us in such a way so that we could have sculpted in a very record time. Any specialities and how long will it take to finish your project and everything? देखिए, सबसे बड़ी बात किसी भी मूर्ति की होती है कि उसके फेशियल एक्सप्रेशंस और उनके फीचर्स और एसेंस के ऊपर आप पाएंगे. ये जो स्कल्पचर है ये बाबा साहब की उस जीवनचर्या का, जिस जीवनचर्या में उन्होंने संविधान को लिखा था. एक ना तो बहुत ज़्यादा उम्रदराज, ना बहुत ज़्यादा यंग. सो इन सब चीज़ों का श्री लक्ष्मी मैम का हमेशा गाइडेंस रहा कि फेशियल एक्सप्रेशन कैसे रहे. आपके जितने भी मिनिस्टर्स थे वो हमारे स्टूडियो पर यदा कदा आते थे. वो स्कल्पचर के बारे में बताइए, मेटल के बारे में बताइए, और आपने जो न्यू पार्लियामेंट का भी वो डिज़ाइन वो किया ना, उसके बारे में बताइए सर. ओके, सो देखिए, ये 125 मेट्रिक टन मेटल ब्रॉन्ज हमने इसमें इस्तेमाल किया है, एंड 350 मेट्रिक टन के करीब इसमें ऐसा स्टील इस्तेमाल किया है. ऐसा माना जाता है कि द लाइफ ऑफ द ब्रॉन्ज स्कल्पचर इज मोर देन 5000 years. लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ दिस. इन मोहनजोदारोस वी गॉट एंशिएंट स्कल्पचर्स which are made up of bronze. That is 5000 years ago. We have tested this bronze, LTB bronze we have used in 85% is copper there in making this. 17 feet is the face of the Baba Saheb Ambedkar, 4 feet is the eye of the sculpture. So that's a huge స్కేల్. 4 అడుగుల కళ్ళు అండ్ ఫేస్ మొత్తం 17 అడుగులు, 17 ఫీట్ का फेस, 17 फीट का चेहरा है उनका. 75% का 75% कॉपर इसमें, लेड, टिन एंड मैग्नीशियम जैसे धातु का हमने इसमें इस्तेमाल किया है. इन सब धातु को मिला करके और हमने इस मूर्ति को बनाया. एक चीज़ मैं और स्पेसिफिकली अंडरलाइन करना चाहूँगा, इट्स ऑलवेज ए टीम वर्क. सर, व्हाट्स योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट? कहाँ बना रहे हैं आप, कौन सी मूर्ति बना रहे हैं आप? देखिए, अभी तो जब तक ये चल रहा है तब तक मैं यही कहूँगा कि दिस इज़ द वन ऑफ द यूनिक प्रोजेक्ट, एंड आई विल कीप गेटिंग अपॉर्चुनिटी, आई विल कीप डूइंग न्यू वर्क. न्यू पार्लियामेंट ऑफ बिल्डिंग मैंने किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया किया, राम मंदिर जो बन रहे हैं उनके इनर परकोटा के काम मैं कर रहा हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव डन माई वर्क हैव बीन इंस्टॉल्ड इन मोर देन 80 countries, 230 cities. My name is in Guinness Book of World Record, Limca Book of Records. In the making of these sculptures, I think we have a staff of around 300 people, so we all work together. So, but you know, since ever our leaders like Jagan Mohan Reddy sir came into the era, they have always motivated us to bring the technology into the doing any kind of work. So even in sculptures we are using the most high-tech technology. So next I think you will be in Ayodhya, because 22nd it's very nearby. So sir, अयोध्या में हमें इनर परकोटा में ब्रॉन्ज के कुछ स्कल्पचर्स बनाने का मौका मिला है. माई स्पेशलिटी इज मेकिंग समथिंग इन ब्रॉन्ज ओनली, सो आई एम डूइंग दैट इनर परकोटा ऑन द लाइफ स्टाइल ऑफ राम. एक्चुअली आई एम वर्किंग.